नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपका कोई भी सवाल हो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, वो भी आप आपसे शेयर करेंगे। और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं, जिसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। टोल फ्री नंबर 1800-120-4775 आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अमर देव सिंह, हेड एडवाइजरी एट J1। वेरी गुड आफ्टरनून अमर सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। Very good afternoon, Geetu. Thank you for having me on the show. प्लेजर सर। अमर सर, पहले बाजार की बात करते हैं। निफ्टी इट इज क्वाइट स्मार्टली होल्डिंग अबाउट 19,400 फॉर सम टाइम नाउ। आज 450 का लेवल भी क्रॉस किया एक समय में, लेकिन टिक नहीं पाया। यहाँ से आपको क्या लगता है ऊपर की कैपिंग कहाँ पे है और नीचे का एक सपोर्ट कहाँ पे है? अच्छा, निफ्टी की तो निफ्टी की मैं बात करूं तो व्हाट वी आर सीइंग इन निफ्टी इज दैट निफ्टी हैज बीन होल्डिंग द लेवल्स एज यू राइटली सेड। तो यदि मैं शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स देखूं तो कहीं ना कहीं वो ये दिखा रहे हैं कि देयर कुड बी सम लेवल ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इन निफ्टी और सम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज अराउंड 19,450 19,500 फॉर निफ्टी, बिकॉज वो एक काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। और अभी मार्केट्स में क्या हो रहा है कि यदि आप डेली का ट्रेंड देखेंगे तो डेली का ट्रेंड हैज टर्न्ड पॉजिटिव, बट एट द सेम टाइम इट इज नाउ मूविंग इनटू ओवरबॉट टेरिटरी। और यदि मैं वीकली का ट्रेंड देखूं निफ्टी का तो दैट इज स्टिल साइडवेज। तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट्स जनरली यू सी अ लॉट ऑफ चॉपी ट्रेडिंग सेशंस। और वीकली की मैं बात करूं वीकली चार्ट्स पे तो एज आई सेड समवेयर अराउंड 19,450 19,500 दैट्स अ वेरी क्रूशियल जोन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस पे होगा क्या इन लेवल्स पे? जब भी आप देखेंगे मार्केट्स निफ्टी उधर आएगा तो यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स आर बीइंग क्रिएटेड एंड आल्सो दोस हु वर लॉन्ग अर्लियर दे लाइक टू बुक देयर प्रॉफिट्स, बिकॉज जब तक ये लेवल टूटता नहीं है ऑन द अपसाइड और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, कुड सी दैट वी कुड सी सम चॉपी ट्रेडिंग सेशंस। However, the range is very small. तो on the downside निफ्टी की मैं बात करूं तो 19,200 से 250, that's a very strong support zone, 450 500। so ये 200 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स का ही एक रेंज फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। एक बार गैप अप होता है above this level, then we could see some very fast up move in Nifty towards 19,700 19,800। अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखें आज, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द निफ्टी एंड सेंसेक्स आर डाउन, बैंक निफ्टी इज होल्डिंग अप। अब ये हरे निशान में तो है, लेकिन निफ्टी इस समय लाल निशान में है। तो कितनी उम्मीद रखी जाए कि आज बैंक निफ्टी सपोर्ट करके निफ्टी को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाए? तो यदि आप बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में ओवरऑल वी आर सीइंग सम पॉजिटिव ट्रेंड इन HDFC ICICI PNB। SBI में हालांकि हल्का सा एक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट मोर और लेस बैंकिंग ओवरऑल बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं चाहे वो एक्सिस हो कोटक हो, ये सब ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहे हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। तो दैट्स द रीजन वी आर सीइंग एन अपसाइड इन बैंक निफ्टी। हाउएवर बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है यदि मैं उसकी बात करूं तो बैंक निफ्टी पे भी अपसाइड में देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कमिंग अराउंड दी 43,000, you can say 900 and 44,000। That's a very strong resistance zone। और आज की भी बात करूं तो हाई वाज अराउंड 43,876। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये सब लेवल्स जो है काफी क्रूशियल हैं। और ऑन द डाउन साइड 43,200 42,000 43,300 ये रेंज है ऑन द डाउन साइड। सो इट्स मोर ऑफ अ चॉपी ट्रेडिंग सेशन, बट एज आई सेड कि majority of the banking stocks today are in green or marginally in green। That's what is holding up the bank nifty। जी, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर हमें लिखते हैं राकेश सिंह, उनका नाम है। आरती ड्रग्स के 500 शेयर उनके पास एट द रेट ऑफ 549, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें, ये उनका सवाल। तो आरती ड्रग्स की मैं बात करूं तो आरती ड्रग्स में व्हाट वी हैव सीन इज कि इस स्टॉक में एक अच्छी पहले तो रैली आई, उसके बाद वी हैव सीन दैट द स्टॉक इज करेक्टेड। तो ऑलमोस्ट फ्रॉम 650 लेवल से करंटली द स्टॉक इज अराउंड 485 लेवल्स, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग द बाइंग प्राइस इज समवेयर अराउंड 550। राइट, तो प्रॉफिट तो है ही नहीं। करेक्ट।
तो 550 अब इन्होंने यदि डाउन ट्रेंड में बाय किया है तो नाउ विल हैव टू वेट, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, यदि मैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करूं, मंथली चार्ट्स की बात करूं, तो दैट इज क्लियरली डिस्प्लेइंग कंसोलिडेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑन द डाउन साइड जो रिसेंट इसने लो बनाया है 444 का, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के वन कैन होल्ड वंस पोजीशन। ऑन द अपसाइड द स्टॉक नीड्स टू सस्टेन अबव द 500 लेवल। तो ऊपर जाता है देन वी कैन सी सम अपसाइड, बट आई वुड से कि वी कुड सी सम, इनको यदि अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बार निकलने का तो निकलना चाहिए, बिकॉज समवेयर अराउंड 550 570 दैट्स अ जोन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। और तो ओवरऑल मैं ये नहीं बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज इन फॉर कंसोलिडेशन आफ्टर द शार्प रैली दैट वी विटनेस्ड, so we could witness some range bound trading in this particular stock. तो राकेश जी, आप रखे स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 444 एक काफी अहम लेवल है, इसको आप एक स्टॉप लॉस बना के आप अपने पोजीशंस को होल्ड करें। आपने काफी ऊपर के स्तर पे लिया है, लेकिन 550 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है। जब भी आपको मौका मिलता है, एक बाउंस बैक इस स्टॉक में आता है और 550 के लेवल्स यहाँ पे आ जाते हैं जो आपका बाइंग प्राइस भी है, तो एक बार एग्जिट करें तो बेहतर रहेगा। पर लॉन्ग टर्म चार्ट्स स्टिल लुक वेरी गुड। आपको थोड़ी बहुत पेशेंस रखनी होगी अगर आपको इस स्टॉक से पैसा कमाना है तो। और अगर आप 1 से 2 साल तक निवेशित रहते हैं तो जरूर ये स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और लंबी अवधि में आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे पाएगा। पर मीडियम टू शॉर्ट टर्म आई थिंक आपको यू हैव टू एडयर टू द लेवल्स जो अमर सर ने आपको सजेस्ट किए हैं। दिवांकर कुमार जी का सवाल है, वेस्टर्न ब्रांड्स के 3000 शेयर एट द रेट ऑफ 110 एक साल से होल्ड किया है, क्या करना चाहिए? देखिए, इस स्टॉक की मैं बात करूं तो इस स्टॉक ने पहले तो एक बहुत साइजेबल करेक्शन देखने को मिला है, ऑलमोस्ट फ्रॉम 190 लेवल्स इन अगस्त 2021 इट केम डाउन टू 84 लेवल्स इन मार्च 23। तो द स्टॉक वाज इन अ सेक्युलर बेयर मार्केट, उसमें एक बीच में हम लोगों ने एक पुल बैक भी देखा था मई 22 से, when the stock from almost 80 levels 85 86 levels went to 138 140। अभी फिर हमें एक वैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बट इस स्टॉक में सबसे बड़ी जो मेजर लेवल जो दिखती है मुझे रेजिस्टेंस की, वो समवेयर अराउंड 135 140 जोन है। और यदि मैं ट्रेंड की बात करूं तो अगेन ट्रेंड इसका फ्लैट है, देयर इज नो ट्रेंड टू से, so this is one stock one can hold on to with a stop loss below 108। and if you ask me currently it's around 116 odd levels, तो ये सस्टेन करता है 120 के ऊपर, 120 के ऊपर सस्टेन करता है, then you can expect the stock to rally towards 135 140। वो एक मेजर लेवल है। आप ये क्लियरली समझ लीजिए कि इस स्टॉक में मेजर रैली तभी आएगी जब ये 135 140 का जोन जो है रेजिस्टेंस जोन, उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम सिग्निफिकेंट एंड शार्प रैली इन द स्टॉक, नॉट बिफोर दैट। तो दिवाकर जी, आप इस स्टॉक को होल्ड करें, स्टॉप लॉस 108 के आसपास जरूर रखिएगा। 110 की आपकी खरीद है, 116 करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रहा है। अमर जी का ये मानना है कि जब ये स्टॉक डिसाइसिवली 130 140 के ऊपर ट्रेड करेगा तब जाके वहां से काफी अच्छा मोमेंटम और एक मूव आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। So again, you have to have patience if you really want good returns from the stock. So for now, stay invested 108 के stop loss के साथ। हरी का सवाल आया है, वेल्सपन लिविंग पे 500 शेयर एट द रेट ऑफ 132 होल्ड करे और टारगेट क्या हो सकता है? तो वेल्सपन की मैं बात करूं तो करंटली वेल्सपन इंडिया जो है वो 149 150 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। और so he's bought at 132 level, so there is some profit in the stock। What we are seeing is कि weekly charts पे और daily charts पे more or less एक consolidation हमें देखने को मिल रहा है। और यदि मैं long term charts पे जाके देखूं तो somewhere in September of 2021 2 साल पहले the stock had made a high of almost 170 and recent जो high है वो भी इस stock का 160 के आसपास करा है। तो 160 170 is a major zone of resistance, मतलब that's an all time high for the stock वेल्सपन इंडिया के लिए। तो उसके ऊपर चलता है then you can expect some major rally, otherwise what will happen, you will see a lot of profit booking coming in। तो आपको मेरा ये एडवाइस है कि you should definitely look at booking profits at the current level। और ये जरूर है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। यदि इसमें कोई मेजर करेक्शन आती है सो दैट कैन बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसका मेजर सपोर्ट जोन की मैं बात करूं जहां बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है वो 120 130, दैट्स अ वेरी गुड लेवल।
if the stock corrects till that level. Current levels पे you can look at booking profits. Only above 170, again major rally will happen. Around 120, 130, that could be a level to re-enter this. कुछ सवाल हमारे पास YouTube के जरिए भी आए हैं, उनको ले लेते हैं। मुस्तफा शेख जी का सवाल है, Biocon buying price is 245,000 shares. Any chance की रिकवरी हो? मैं लॉस में हूँ, 5 to 6 months का horizon के साथ चल रहे हैं हम लोग। देखिए, Biocon is, I would say, one of those stocks which has clearly underperformed the markets because यदि मैं बात करूं तो almost from 500 levels, 490 levels in December 2020, the stock is currently less than half of its that value. And recently in March, in the month of March, it had made a low of 191. उसके बाद एक रैली हम लोगों ने देखी towards 280 और लेवल्स। तो इसका मैं लॉन्ग टर्म, यदि मैं स्टॉक के बारे में लॉन्ग टर्म बात करूं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अभी भी डाउन का है। तो होता क्या है, जब ट्रेंड डाउन का रहता है लॉन्ग टर्म, तो दैट मींस कि हायर लेवल्स पे जब भी बाउंस बैक होता है तो देयर इज अ सेलिंग प्रेशर दैट वी सी इन द स्टॉक। सो करंटली if you have a buying position on the daily charts, we've seen the stock bounce back 217 से अभी करीब 226 के आसपास चल रहा है। 235-40 is a zone of resistance for the stock. But this is not a stock, I would say, where you can expect some significant upside. Yeah, the stock, if it breaches the 240 levels, we could see the stock rising towards 250, 260 levels. But again, high levels पे इसमें थोड़ी selling pressure आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा इस स्टॉक में पोजीशन जब आपने बना रखा है, बिकॉज इसमें ट्रेंड चेंज जो है वो फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। ओनली अबव 270, 280 यदि ये स्टॉक कंसिस्टेंटली सस्टेन करता है, ट्रेड करता है, देन वी कुड से दैट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज चेंजिंग। अदरवाइज द ट्रेंड रिमेन्स, लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिमेन्स डाउन, मीडियम टर्म ट्रेंड रिमेन्स साइडवेज, शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज अगेन फ्लैट। तो इसका मतलब हुआ कि ये मोर और लेस चॉपी रहेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जरूर एग्जिट करें। मेजर रैली इसमें 270, 280 के आसपास है। हाँ, यदि 245, 50 के ऊपर सस्टेन करता है, देन यू कैन होल्ड योर पोजीशन टुवर्ड्स 260, 265 लेवल्स। किरण का सवाल आया है, सर योर व्यू ऑन वास्कॉन इंजीनियरिंग फॉर लॉन्ग टर्म। वास्कॉन इंजीनियरिंग, so if I look at Vascon engineering, currently I believe it's trading around 75, 76, correct? Right. Yeah, so यदि मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे इसे देखूं तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे द स्टॉक इज वेरी स्ट्रांग, और स्टॉक ने एक रीसेंट रैली भी इधर से मार्च से ऑलमोस्ट 20, मतलब मार्च से द स्टॉक हैज ग्रोन बाय एटलीस्ट 3x from 25, 26 levels. It's currently around 75. So the stock has been a multi-bagger of the last 6 months or so. Currently, is level pe entry I would not recommend, because what we are seeing is that there is a double top formation on the daily charts. So somewhere around 82, 83 on the upside. आप ये मान के चलिए 83, 85 zone is a zone of resistance. So the stock could meet with some selling pressure. However, long-term charts, the momentum is very strong. तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि स्टॉक में कुछ मेजर करेक्शन आती है, so that can be a buying opportunity, but not at the current levels. If you ask me this, what could be a good level to look at entry, somewhere around 65, 68, that could be a good level for it. Okay. टेकपाल भाटिया जी का सवाल आया है, long-term buying price for Aapke Pharma. He wants to really enter the stock and buy the stock. So what is the long-term buying price, the entry price for Aapke Pharma? So the current price is, I believe, 385 levels, correct? Yes. So if you ask me, इस स्टॉक में क्या हुआ है कि ये स्टॉक ने एक अच्छी रैली तो पहले दिखाई, और उसके बाद फ्रॉम ऑलमोस्ट 240 levels to 480 the stock doubled and currently it's around 385 levels. तो इसमें जो अच्छे लेवल्स हैं, यदि आप मुझसे पूछेंगे कि यदि कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन बिल्ड करना चाहता है तो एनीवेयर, तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर लुकिंग एट बिल्डिंग अ पोजीशन इन अ लॉन्ग टर्म, फॉर अ लॉन्ग टर्म इन एनी स्टॉक, then couple of things. One is fundamentally the stock has to be good, one. Secondly, that it should not be a controversial stock. Thirdly, stock should be consistently displaying a CAGR, that is in terms of sales, in terms of profitability. And fourthly, you should look at entering the stock in a SIP mode. मतलब at least 2-3 एक ही बार में, यदि आपको सपोज 100 शेयर्स लेने हैं या 500 लेने हैं या 600 लेने हैं, तो don't buy all the stock at one time. You should look at a staggered buy.
तो इसके यदि लेवल्स आप मुझसे पूछेंगे आरती फार्मा के, फार्मा लैब्स के, तो इसका जो a good level for buying, if you ask me, so that would be somewhere around 350 360 zone. That can be the first level of buying. उसके बाद यदि वहां से भी स्टॉक करेक्ट करता है, then 330 320, that's the next zone of crucial support. Then you can look at buying from that perspective. So that will always help you the average out your price. Right. दीक्षा पांडे जी का सवाल आया है और दीक्षा wants to ask about India's India Limited 1000 shares at the rate of 116. लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? This is the question that she's asking. So if I look at Engineers India, so what we are seeing is कि इस particular stock में we witnessed a significant rally, and then the stock has corrected from almost 167 levels, currently around 130 or levels. I would say look at your entry somewhere around 116, book profits at the current levels, क्योंकि कोई further upside जो stock में है only will be above 135. And if you ask me, इसके जो weekly charts हैं, they are not very positive. Long term charts, yes, long term charts are good. Daily charts में we could see some upside, but 135 के ऊपर जाता है, then you would expect some rally. So what we could do, 50% you can book at current levels. Rest, if you want to hold your position, you can trail below 127 odd levels, or maybe below 126, or 135 के ऊपर sustain करता है, then you can look at an upside target towards 140 to 145. So Diksha, partial profit booking at current level, so 130 के आसपास का प्राइस है, 116 आपकी खरीद है. So जो suggestions अमर सर ने आपको दी है, I hope you have penned it down. So stick to what he has said about the levels. So अभी partial profit booking की सलाह आपको यहाँ पे दे रहे हैं, बाकी आधा हिस्सा होल्ड कर सकते हैं for long term. घारगी का सवाल आया है सन फार्मा एडवांस को लेके, 700 शेयर है उनके पास at the rate of 235. इसमें आपकी क्या सलाह है? So if I look at Sun Pharma Advance, so ये stock में what we are seeing is कि the stock has not performed at all. एक stock है जिसमें यदि किसी ने इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में रखा हो तो he or she has not made any money. इसमें कुछ रैली जरूर हम लोगों ने देखी, but the stock is appearing to form a base. So what it means is कि downside seems to be limited, but upside में क्या है कि the stock needs to first of all sustain above the 245 250 mark. ये एक level है for the particular this particular stock. Above 245 246 you can expect it to rally towards 260 265 levels, जो एक काफी strong resistance zone रहेगा stock के लिए. यदि 265 के ऊपर stock sustain करता है, then you can expect some major rally in the stock. Otherwise the stock is likely to consolidate. On the downside it has got very strong support around 215 or so. तो अभी आप होल्ड कर सकते हैं, 245 के ऊपर चलता है, then you can expect some good rally towards 260 65. और हाँ, you can book profit above 265, then only some major upside towards 270 280 would be possible. Otherwise the stock will fade in a narrow range. जो चार्ट आपके स्क्रीन पे थे वो सन फार्मा के थे, वो सन फार्मा एडवांस के नहीं थे, तो सन फार्मा इज समवेयर अराउंड 1000 प्लस. शायद मेरे प्रोड्यूसर्स ने गलती से वो चार्ट फायर कर दिया था. अमर सर, व्हाट आर यू बाइंग इन pharma space? Because एक stock है Piramal Pharma which has seen a very good run up in last few sessions. वहाँ पे काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा था. Anything that you would prefer at this point in time in the pharma space? See, if I look at the pharma space, I would say Cipla is one stock which has really performed quite well, and it's definitely strong on the long-term charts. So on any decent correction, this is one stock one can look at. Levels to look at for on the downside is 1130 1150. That's a very strong support zone for the stock. Upside is towards 1280 or levels, because current levels पे buying I would not recommend, but any pullback can be used as a buying opportunity for this stock. This is one can definitely look at. पुलकित का सवाल आया है Edelweiss Financials को लेके. He is holding 2000 shares at the rate of 58. एक साल से होल्ड किया है. अब क्या करना चाहिए? देखिए, Edelweiss की बात करूं, Edelweiss Financial Services, तो इसमें एक अच्छी रैली तो हम लोगों ने देखी. We started again from March, so from 30 odd levels.
the stock rallied towards 70, 75. Currently it's around 60. तो more or less इनके बाइंग प्राइस से 2 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है. तो if you ask me, this is one stock you should look at exiting somewhere around 65, 65, 67 levels पे आता है, तो you can look at an exit price, exit opportunity. But उससे पहले the stock needs to sustain above the 63 mark. If you ask me, technically on the charts, long-term charts, it is positive. Weekly charts, it's more or less flat. Daily charts, we are seeing some negative pressure. So what it effectively means is कि ये नीचे आ सकता है थोड़ा सा और further, because इसका एक जो major support zone है, that is somewhere around 57, 58 levels. और upside में, immediate upside में, it needs to sustain above the 62, 63 for an upside move. But I would recommend कि आपको मौका मिलता है तो you should exit the stock and look at other stocks in the financial space. जी, YouTube के जरिए किरण चौधरी जी का सवाल आया है. विश्वराज शुगर के उनके पास 5,000 शेयर है. उनकी बाई प्राइस इज 20 रुपीज. So if you are tracking this stock on technical side, sir? I don't track, but I'll just pull up the chart and see. Yeah. So if you ask me again, ये एक ऐसा stock है which has not at all delivered returns over the last year or so, because the downside में we've seen कि March में it was around 13 and then it did rally. There was a very fast move towards 22 odd levels and then the stock corrected to 15, 16 and अभी it's around 17, 18. तो इसमें I would say कि technically speaking, I would say it needs to sustain above 18, 18.5. तो आप होल्ड कर सकते हैं. इसमें इसका डेली ट्रेंड जो है, बस आप इस लेवल को याद रखिए, 1850. इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है, देन यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी. बट यू नीड टू रिमेंबर कि अपसाइड में अगेन 20 इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. तो 19.5, 20, क्योंकि वो एक शॉर्ट टर्म टॉप बना हुआ है. तो वो टूटेगा, देन यू कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू रैली, बिकॉज अगेन ऑन द अपसाइड next level would be around 2150, 22 odd levels. तो higher levels पे हर एक 2 रुपए के ऊपर आसपास technically there is a short term top which we are witnessing. तो ये समझना काफी important है. तो आप इसे इस तरह से देख सकते हैं. जी, अमर सर, बहुदर ट्रेडिंग की तैयारी हो गई. आपके लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स है जो आप खरीदने वाले? So I would say if you ask me from a long term perspective, then there are definitely few stocks. One is that IDFC First Bank is one stock one can look at from a long-term perspective. That's one stock. Again, Tata Motors is another stock one can look at from a long-term perspective. Any corrections, but हमेशा याद रखना है कि जब आप long-term invest करते हैं, तो you should always have a staggered buying. You should have a portfolio. You should have a diversified view on that particular portfolio, and you should look at a SIP mode. So usme everything will work in your favor as long as you are invested in quality names and you hold, and then you should have a holding period, not only 1 year, at least 3 to 5 years का holding horizon लेके चलते हैं, then you will get really good returns. So any trading bets, sir? On the trading side, if you ask me, so one can look at Lupin is one stock. From a trading perspective, we've seen that the stock has moved up. Currently, it's around 1214 odd levels. So, इसमें एक correction आता है around 1180, 1190. So that can be a short-term buying opportunity with a target towards on the upside towards 1230, 1240. अमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, and I wish you all the best and a very happy Diwali to you, your family, and your team. Thank you and wishing you the same. A very happy Diwali. Thank you so much. प्रोग्राम को यही पर समाप्त करते हैं. आपको याद दिला दी कि अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें YouTube के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं. कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल पोस्ट करिए, उसे हम अपने अगले कार्यक्रम में देने की पूरी कोशिश करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. कल फिर से मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.